गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ डिस्ट्रीब्यूट बजेट केमी डिस्ट्रीब्यूट करछि अकॉर्डिंग माने वेरियस फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन हेल्थ and agriculture influencing economic growth education health every many so many child development middle small enterprises shipping road transport okay so many department को हमको allocate करछि गवर्नमेंट बजेट हेल्थ एग्रीकल्चर करछि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इन्फ्लुएंसिंग कौन होछि इकोनॉमिक ग्रोथ होछि एंड डेवलपमेंट होछि इन इंडिया सेट्स इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एक्चुअली कौन गवर्नमेंट प्रायोरिटीज दोछि अबाउट द इकोनॉमिक प्रायोरिटी दोछि इन द बजेट गवर्नमेंट प्रायोरिटी दोछि का ऊपर हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर माने मोस्टली रूरल डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना सो मेनी सेक्टर के सब अछि इट रिफ्लेक्ट्स द गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्रायोरिटी दोछि एंड पॉलिसीज दोछि गाइडिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सब गाइडिंग करछि इन्वेस्टमेंट केन पीपल इन्वेस्टमेंट कर म्यूचुअल फंड एलआईसी सो मेनी इन्वेस्टमेंट पीपल करछन्ती एंड एक्सपेंडिचर करछन्ती टुवर्ड्स द टारगेट द डेवलपमेंट ऑफ गोल्स इंडिया डेवलप गोल इंडिया डेवलपमेंट केमती देशर इकोनॉमी केमती हाई होछि आपण माने जानथि आपण माने कोन जानथि हमर इन्वेस्टमेंट होछि इंडिया इकोनॉमिक गोल होछि इंडिया इकोनॉमी केमती आम अर्न करूँ भारत में इन्फ्रास्ट्रक्चर जो होची एग्रीकल्चर जो होची सर्विस जो होची सेवा जो होची टेलीकॉम आम सफ्टवेयर से बिकुचे आम बाहर को ना मैन्युफैक्चर जिनस तैयारी बिकुचे आम सब प्रोडक्ट बिकुची फूड बिकुची डायरेक्ट रॉ मटेरियल बिकुची गुड सर्विस तापर मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्ट इम्पोर्ट इम्पोर्ट अर्थ आने इम्पोर्ट जो आम देश किसी उन्नति होनी लॉस होता इन्वेस्टमेंट आम करूँ एक्सपेंडिचर करूँ टुवर्ड्स टारगेट डेवलपमेंट गोल्स आम जो डेवलपमेंट उन्नतिर गोल्स मैंने लक्ष्य को आम अचीव करुँच मैनेजेस फिस्काल पॉलिसी फिस्काल माने कौन राजकोष नीति आम जो आम राजकोषर एक्सपेंडिचर होची इनकम होची राजकोष नीति कहते मैनेज कर बजेटा फिस्काल पॉलिसी को मैनेज कर बजेटिंग हेल्थ मैनेजेस फिस्काल पॉलिसी फिस्काल डेफिसिट डेफिसिट तो जानते डेफिसिट माने गोटे जो खर्च आउची आम एक्सपेंडिचर आउची आम अर्निंग के रोजगार के एक्सेप्ट के रिसीव के ग्रहण के खर्च होची एक्सपेंस के तार जो अंतरटा डिफरेंसटा कहते फिस्काल डेफिसिट आम देश बर्तमान फिस्काल डेफिसिट अच्छी कौन नियंटिया बजेट आम अच्छी फिस्काल डेफिसिट आम कारण आम लोन दिया 10 लाख 12 लाख कोटी टंका इंडिया लोन बर्तमान 3 लाख क्रोर हो सॉरी 250 लाख 250 लाख कोटी अमेरिकार बर्तमान के 30 ना 50 लाख कोटी टंका हो 100 लाख कोटी टंका अमेरिकार सॉरी अमेरिकार 100 लाख नु अमेरिकार के 3-4 हजार 5,000 3,000 ना 2,000 लाख कोटी टंका हो भारत 250 लाख कोटी टंका बर्तमान 2014 थिला केते हमरो 52 ना 55 लाख कोटी टंका थिला so this is the fiscal deficit taxation and public expenditure to stabilize हम जो taxation गवर्नमेंट करछ जीएसटी लागुची and public expenditure जो public हम खर्च होची ये सुभद्रा योजना हो ये 1 किलो राइस हो एवरीथिंग सब एक्सपेंडिचर सब होची public expenditure to stabilize the economy and promote growth इकोनॉमिक कमर्स हमारे इंडिया कौन थिला 5 नंबर इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी थिला जो वर्ल्ड रो 5 नंबर थिला इकोनॉमी रे 3 नंबर थिला 3 रो बर्तन 5 को पळलानी बर्तन 5 ना 6 को पळलानी इंडिया रे इकोनॉमी बर्तन के फास्ट होची रशिया फास्ट होची यूएसए देन होची कोन चाइना तार पर होची कि फ्रांस इंग्लैंड जापान मन सब इंडिया जापान पर बोले थिला 4 नंबर ना कोन थिला पुनी 5 नंबर को पळजी 5 नंबर इकोनॉमी प्रमोट सोशल वेलफेयर को ये बजेटा केमती वेलफेयर कर बजेट पीपुल मैंने गवर्नमेंट इंडिया आलोकेट कर बजेट इन एवरी सेक्टर सोशल सेक्टर मीन प्रधानमंत्री आवास योजना नरेगा एमजी नरेगा जो यहाँ आम जी राम जी जो होगा महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रूरल गारंटी जो गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लोक 125 डेज कम मिलूँ लोक 250 कि 300 रुपीज पाइबे फॉर 100 डेज ए 125 डेज सब गवर्नमेंट बेनिफिट सब करूँ पीपल वेलफेयर पब्लिक बिकज इंडिया हूँ गोटे कौन डीपीएसटी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट पॉलिसी इंडिया हूँ वेलफेयर स्टेट भारत गोटे मंगल जनमंगल राज्य भारत गोटे जनमंगल देश ना से बर्तमान प्रमोट सोशल वेलफेयर फंड सार इयर मार्क ऑफ सोशल स्कीम होती अपलिफ्ट मार्जिनलाइज सोसाइटी कहते मार्जिनलाइज सोसाइटी माने कौन मार्जिनलाइज माने कौन मार्जिन आम जो भलरेबुल पुअर बैकवर्ड एससी एसटी एम सब आदिवासी भलरेबुल ट्राइबल एम सब सोसाइटी अच्छा सब कम हो दैट इज हूँ कौन मार्जिनलाइज सोसाइटी कंट्रीब्यूटिंग टू इनक्लूसिव डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट कर इनक्लूसिव डेवलपमेंट इनक्लूसिव डेवलपमेंट कौन समस्त की नहीं जो आम डेवलपमेंट हो ऑल माने गवर्नमेंट एक्वायर taking all the peoples government will continuing to develop kariba according all the peoples all type all sector marginalized tribal rural urban every people the budgeting process in Odisha
aligns with the national framework in several ways, also has differences ଅଛି budgeting process in Odisha also aligns with the national framework भारत जो national ଜାତୀୟ national framework ମାନେ जो ढांचा frame ମାନେ କ'ଣ ଚାରିପଟ जो ढांचा ସହିତ इंडिया ମଧ୍ୟ ତାର align କରୁଛି in several ways but also has difference କ'ଣ ସବୁ ଅଛି India budget also India passing budget Odisha government also passing budget India align with जो Odisha align with Indian budget Indian government सहित ମଧ୍ୟ align କରୁଛି समान କରୁଛି affiliation ଅଛି କିନ୍ତୁ difference କ'ଣ ଅଛି alignment କ'ଣ ଅଛି Odisha state budget follow the overall international fiscal guidelines ତାଙ୍କର fiscal guidelines ଟା ରାଜକୋଷୀୟ ଯାହା guidelines Odisha ମଧ୍ୟ follow କରୁଛି guidelines ସେଥିପାଇଁ ତ finance commission ର କାମ କ'ଣ allocate କରୁଛି budget କରୁଛି share କରୁଛି budget କୁ ଆମର जो finance minister କାମ କ'ଣ ଲେଖା ନଥିବ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଜାଗାରେ ଅମୁକ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ସେଇ So guidelines set by the Finance Commission and central government policies regarding taxation and expenditure norms. In the taxation, expenditure norms, niti, rule regulations सब अच्छी हमारा. It alignment and differentiation कौन सब अच्छी हमारा state specific priority. State को specific priority दिया नहीं. बिहार को हमको दिया full place state दिया हमको पूरा ଗୋଟେ special status दिया. ये specific priority दिया होची. North East region को जम्मू कश्मीर ଗୋଟେ special status दिया इतना. सेमती बर्तमान जो गरीब राज्य बिहार ओडिशा को भी स्पेशल पैकेज मिले सब ओडिशा में प्रायोरिटाइज सेक्टर स्पेसिफिक टू इट्स नीड्स लाइक ट्राइबल वेलफेयर पे मिलुଛି इंडिया ओडिशा रे अधिक 15टा अछन वल्नरेबल ट्राइबल जो पीबीटी ग्रुप अछन जो हमर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप अछन तो ये वेलफेयर पे ट्राइबल वेलफेयर डिजास्टर मैनेजमेंट ओडिशा रे माने ओडिशा इज की प्रोन टू साइक्लोन प्रोन टू नेशनल जो डिजास्टर natural disaster सब ओडिशा प्रोन एरिया so that is adapting with management होची adapting national frameworks to local requirement लोकन रिक्वायरमेंट बदन कोन अछि ट्राइबल पीपल्स डिजास्टर पे बदन प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना बात्या आश्रय स्थल जो साइक्लोन शेल्टर होम एरे सब दरकार कम्युनिटी होम दरकार कम्युनिटी लैट्रिन टॉयलेट कम्युनिटी घर तारे फूड जो स्टोर होई रहइबो रिलीफ मटेरियल पे रिसोर्स एंड एलोकेशन While the national budget sets broad allocation, Odisha budget focus on the state specific project. National budget set abroad, set broad allocation. भारत budget माने broad allocation माने बहुत सेक्टर अछि बहुत माने फील्ड एग्रीकल्चर एमएसएमई तापरे ये हमरो जो एनआरआई अछन नॉन रेसिडेंट इंडियन सब विदेश पई श्रीलंका पई फॉरेन कंट्री पई डिप्लोमेटिक सब रिलेशन होछि एक्सटर्नल जो सब भूमिकंप आज के सब अरबी कंट्री के हला ईरान तुर्की सेठी मते इंडिया हेल्प करछि जो डिप्लोमेसी अलग से रहउछि ओडिशा बजेट फोकस ऑन द स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड रीजनल डेवलपमेंट नीड्स ओडिशा कैन डू ओनली नॉट अ फॉरेन पॉलिसी माने फॉरेन हेल्प नहीं ओडिशा ओडिशा ओनली डेवलपमेंट बेसिक नीड्स रीजनल स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को बदन वर्क करूछि फिस्कल डिसिप्लिन फिस्कल में राजकोषीय डिसिप्लिन कोन बोथ नेशनल एंड स्टेट बजेट एम फॉर फिस्कल डिसिप्लिन बट ओडिशा मस्ट बैलेंस सेंट्रल डायरेक्टिव्स ओडिशा बैलेंस करूछि डायरेक्टिव्स नेशनल डायरेक्टिव विथ इट्स ओन रेवेन्यू देशर कौन बर्तमान फिस्कल पॉलिसी कौन व्हाट आर द नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्म रेगुलेशन रूल को बैलेंस करूँ विथ नेशनल तार जो रीजनल प्रायोरिटी बैलेंस करूँ सेंट्रल डायरेक्टिव्स विथ डेट माने जो निर्देश तार अच्छी विथ इट्स ओन रेवेन्यू तार निजस्व राजस्व कौन एंड एक्सपेंडिचर कौन रियलिटी जाकू से बैलेंस करूँ देन सेकंड क्वेश्चन एटा होची जनरल स्टडीज मेन में पढ़ु जनरल स्टडीज ओएस 2026 तो ओडिशा स्टेट रोड पॉलिसी 2025 emphasize that good road are a catalyst for economic progress actually good road infrastructure good road is the key of development माने मुख्य चाबिकाठी ना रोड नथिला में जीवा कोठी की आर कैटलिस्ट फॉर इकोनॉमी की अमेरिका कोन इंडिया को आसे युद्ध करिया को समुद्र पहरी रोड कनेक्टिविटी दरकार ना रोड तो दरकार रामचंद्र जाइए रोड तैयारी करी इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय द एनेबलिंग एफिशिएंट मूवमेंट फॉर गुड्स एनेबलिंग करथिले एनेबलिंग एफिशिएंट मूवमेंट पूरा भलो मूवमेंट करियो ऑफ गुड्स सर्विस पई गुड पई एंड पीपल लोक मध्ये मूवमेंट करिवे देयर बाय बूस्टिंग ट्रेड बूस्ट करियो ना हां नासिक पियाज बा ओनियन इज रिच इन ओडिशा आलू नाही ओडिशा माने आलू माने पोटैटो फ्रॉम द उत्तर प्रदेश रोड कनेक्टिविटी जो इफ रोड डिजास्टर रोड डिस्टर्ब हो जीवो तो रोड कनेक्टिविटी डिस्टर्ब एट द टाइम ऑफ डिजास्टर जो नेशनल हमरो नेचुरल डिजास्टर टाइम प्राकृतिक दुर्योग समय एट दैट टाइम डिस्टर्ब ऑफ द रोड डिस्टर्ब हो जाउची कनेक्शन फोन टेलीफोन एवरीथिंग टेलीकॉम
energy, electricity. Then people become people face so many obstacles. So efficient movement of goods services people thereby boosting trade tourism is road जो industrial growth सब होची industry हमारा India is already माने all industrial area connected with the माने chain of train railway and national road national highway and express road actually for the industrial development ପାଇଁ for the transport of the coal diesel petrol everything see energy ପାଇଁ coal ପାଇଁ energy road and the railway network is should be necessary for the industrial development ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ କୃଷି ମାନେ now agriculture only 20% some above 22% agriculture income earning but agriculture is manufacturing already 30% mostly service ଭାରତର service ମାନେ ସେବାର ଅଧିକ ଆସୁଛି ଆମର ଯୋଉ ଟେଲିଫୋନ ତାପରେ ହଉଛି ପୋଲିସ ଗୋଟେ ସେବା ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଆମର ସଫ୍ଟୱେୟାର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ସେବାରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ବହୁତ ଅଧିକ ଇନକମ୍ ବାହାର ଦେଶକୁ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କାମ କରିବା ସେବା କରିବା କାମ କରି ଯୋଉ ଇନକମ୍ଟା ତ କହନ୍ତି ସେବା ଗୁଡ୍ସ ବିକିକି ନୁହଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଲାର 100 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି କିଲେ ଚାଉଳ ବିକିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କାଟେ ହବ ଆମେରିକାରେ 100 ଟଙ୍କା ଚାଉଳ ବିକିଲେ ସେଠି ଟଙ୍କାଟେ ମାନେ ସେମାନେ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଲେ ଆମର ଚାଉଳ କିଲେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଇଏ ମ୍ୟାନୁଫାକ୍ଚର ମାନେ ଗୁଡ୍ସରୁ ବେଶୀ ଜିନିଷ ମିଳୁନି the policy outline on our trade tourism industrial growth if road connectivity well most tourism tourists attract towards the Odisha attractive India the policy outlines objectives such as the improving road policy outlines objectives मुख्य होची कोन objectives such as the improving road connectivity enhancing infrastructure means बड़ जो good building over bridge and connectivity express highway जो भारतमाला योजना परियोजना ऐसा दिस इज enhancing infrastructure quality and promoting sustainable transport means sustainable word टा is a typical word what key word most prone word sustainable means what we are using now this time see so next generation would also we should use according to next generations they also enjoy kari paribe so sustainable lagila transport to एमती we cannot use this make this transport that next generation will not सब हमें we use all materials raw materials हमें सब बंध रास्ता घाट पहाड़ पर्वत भांगी रास्ता कर दवा that is not some जो mineral or natural resources should be saved for the next generation for the after 500 years they can use sustainable transport to stimulate regional development ପାଇଁ and attract investment ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସୁଛି ବାହାରୁ investment ଆସୁଛି ବାହାରୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ LIC ସେକ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ AI ସେକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଯୋଉ ରିଲାଏନ୍ସ company is big countries big industries but all the money has not Reliance have not 100-200 lakhs crores people invest करछन्ती in the share market Reliance oil use करूची and Reliance get a profit ताकू दउची so investment also a good source of it is a enabler by encourage करिवो ओडे इंडस्ट्री की so investment ପାଇଁ ओडिसा रे माइनिंग कोल फैक्ट्रीज and ଆମର जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वर्तमान खाद्य वर्तमान बाहर बहुत जिनसे आछि जो बर्गर डोमिनोज चिप्स बिस्किट सब होची फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दैट आल्सो ए गुड फैक्ट्री इन इंडिया रे सब गुड मार्केट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बा फाइनल फूड प्रपोज ऑफ ओडिशा स्टेट हाईवे अथॉरिटी इज इंटेंडेड टू ओवरसी द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी ओडिशा स्टेट हाईवे अछि ओडिशा स्टेट हाईवे अथॉरिटी आ नेशनल इंडिया रे से नेशनल हाईवे अथॉरिटी अछि दे शुड कोलैबोरेट करिवे कोऑपरेट करिवे ओवरसीज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी ओवरसीज करी देखिए दूरदृष्टि इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी ए जो रोड ट्रांसपोर्ट को फोकसिंग इन सिस्टमैटिक प्लानिंग करिवे केमती प्लानिंग करिवे द फाइनेंसिंग करिवे एंड मेंटेनेंस ऑफ द हाईवे and major actually state highway and national highway authority they should accommodate they should unitely manage and the action plan karibe how to manage implementation of the good highway project road project and it will facilitate in the transport and facilitate the supply of goods service everything that should be blue data what the blueprint should be mentioned should be implemented and better implementation of the road planning financing and the maintenance of the highway and major roads its establishment
roads establishment ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ aims to ensure coordinated development of a road aims to ensure coordinated development coordinate କରିବେ India national state ଭିତରେ coordination ରହିବ development of a road network prioritize the project with high economic impact जो ଆମର स्पेशल इकोनॉमिक जोन रोची चाइना रू पाकिस्तान जो तांकर रोड कनेक्टिविटी करछन कनेक्टिविटी कले तांकर बहुत माने तेल फेल सब दुबई रू वेस्टर्न कंट्री से माने चाइना पाकिस्तान जाई आनी परिबे विथ हाई इकोनॉमिक इंपैक्ट रहबो एंड इंटीग्रेटेड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट कंसीडर सेफ्टी पे रहबो एनवायरनमेंट कंसीडरेशन रहबो इन एसेंस क्वालिटी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वालिटी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रहला माने इकोनॉमिक प्रोग्रेस रहबो थ्रू रिड्यूस लॉजिस्टिक पीपल विल माने इंडस्ट्री भी माने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विल बेटर होबो पीपल विल मोर इंडस्ट्री विल ओपन मोर पीपल विल एंगेज हेबे मोर एम्प्लॉयमेंट विल प्रोड्यूस होबो पीपल अर्निंग मोर करिवे मोर तापर मोर बिजनेस आसीबो होटल इंडस्ट्री तापर बिजनेस मैन शॉप सो मेनी इंडस्ट्री माने रिलेटेड industry related so many simple small shop or industry will be open haba ta mane so many people employment paibe get employment and they will earn kariye bhal rozgar karibe and economy will develop haba through reduce logistic cost logistic cost reduce he jibo gote train re truck re if will coal or iron mining iron or if we travel kariba if we send pathaiba किंतु ट्रेन इज माने लेसर चीपेस्ट देन ट्रक एंड अदर व्हीकल्स अदर कम्युनिकेशंस अदर लॉजिस्टिक्स कम पड़ जिवो रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी एक्सेसिबल शीघ्र हो जिवो गोटे दरकार बर्तमान 50 लाख टन तो 3-4 रेलवे रेल प्रोवाइड जोगाई दब विदिन सर्ट टाइम जोटा कि ट्रेन ट्रक रे ट्रैफिक दरकार पूरा गुड ट्रैफिक दरकार गुड माने सो मेनी इट इज टू डिफिकल्ट rather than a railway and job creation haba and all of which are central themes in the 2025 policy and the envisioned the highway authority mandate highway authorities mandate niyati avashyaka envisioned highway authorities mandate actually third question land reforms in India where objectives of land reforms The objective of the land reforms in where abolition of intermediaries actually the land or distribution system actually land or landlords आगे थे सब they were the exploited people British collect money from the landlords and the landlords collect money from the tyranny from the subject from the people so intermediaries should be abolished zamindar system should be abolished to reduce the exploitation redistribution of land to the tiller to the promote equality actually the landlord अब जमीनदान ग्रामदान जो आमर थे किए यूनो विनय हे आचार्य विनय हे से फास्ट स्टार्टेड भूमिदान जमीदान ग्रामदान टू द लैंडलेस पीपल्स SC/ST पीपल्स मार्जिनलाइज शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट एक्चुअली समाज हाई कास्ट पीपल्स दे बिलोंग्स मोर अमाउंट ऑफ हाई ऑल द लैंड्स मोस्ट 70-80% of the lands so land are distribute karala equality for the equality of the land equalize of the land to the landless people so redistribution of the land karala to the landless people promote equity selling of the land on the land holdings agwa so land holdings ba landlords ko 1000 acres 2000 acres of land thila that was selling he gala oppose he gala bond he gala only mane government passed law that only a person can carry 20 acre 30 acre 50 acres माने किछि फिक्स कराइला लैंड्स and all other lands selling हे गेला बंद हे गेला कोलैप्स हे गेला सीज हे गेला बाय द गवर्नमेंट and distributed to the landless people to limit large estates and allocate surplus land to the landless allocate कराइला surplus माने जो distribute कराइला allocate कराइला surplus माने अधिक land to the landless to limit large estates जो का large estates थला tenancy reform जो हमर टेनेंसी प्रजा माने सब्जेक्ट माने को रिफॉर्म कराला टू सिक्योर राइट्स फॉर द टेनेंट्स एंड फिक्स फेयर रेंट्स सब देले राइट्स फॉर टेनेंट्स टू सिक्योर राइट्स पाइले अधिकार पाइले तो टेनेंट राइट पाइले प्रजा अधिकार गवर्नमेंट सबठी होची राजा माने मालिक सब लोक होछन प्रजा माने टेनेंट से माने तो फिक्स फेयर रेंट देबे सब रेंट गवर्नमेंट डायरेक्टली पीपल डिपॉजिट करियो इन द गवर्नमेंट अकाउंट नॉट एनी लैंडलॉर्ड और एनी
any rich persons by any jamidar. Success of these policies in addressing land inequality. Actually policy success है addressing land inequality को address करिया पला. It already access माने common people, poor people, marginal people access करी पले the land. They enjoy करी पले land. अगर land कौन होता है already that spread पड़ी थी लगा बड़ा माने infertile है कि who has 10,000 acres land. He never plow all the land, they never plow all the land, they never harvest all the lands. when lands are distributed करायला unequal persons marginal persons small farmers मानको fertility माने productivity will increase, productivity बढ़ी गला माने most of the land become fertile हैला, become people agriculture, people start agriculture, productivity agriculture, maybe paddy, rice, paddy, wheat, everything see people so seeds बुनिले जाते they income कले. Land selling laws and जमींदारी abolition was largely successful removing the intermediaries माने the medium जो हमारा साहूकार महाजन landlord सब रहिले they abolish गले land selling laws and mixed results due to the loopholes and evasion leaving significant inequality रहिले आदरे. Land selling का जो है law had mixed result due to loopholes रहिला. loopholes माने जो आदरे माने त्रुटि रहिला माने trouble रहिला आदरे lacuna रहिला and evasion living significant inequality रहिला आदरे माने when government declare कला distribute कर the land को among the poor persons but जमींदार जो rich persons who have the large estate but they सेमाने मध्य they also start many government loopholes they also intelligent सेमाने मध्य but 100% land distribution not occur, not happened है पहले नहीं. Tenancy reforms were unevenly implemented. Reforms were unevenly implemented माने evenly है नहीं माने पूरा 100% है नहीं. Upon benefiting powerful groups benefit कला tenancy reforms जो है actually powerful group already get benefit पाई गले. People rich persons जो poor persons marginal persons SC/ST persons villagers farmers they cannot get all the benefits of the tenancy reforms. Overall land inequality persists with the large gaps in ownership and access. Overall land inequality जो रहिला जमीर जो inequality कम बेसी सब लोग कर persist with the large gaps रहिला in ownership रे and access रे. जो जमीदार जो मूल्य बहुत लोक माने काम करले लोक को माने प्रजा tenancy ऊपर काम करेले माने जो large estate जमीदार they have also land तांकर अछि but people only tenants common people they only continuing as a farmer not get the ownership पाइलेनी से माने. Comparison of Odisha with the national scenario Odisha is implementation of the land reforms faced challenges due to the tribal and land rights and administrative inefficiency प्रशासन इनएफिशिएंसी थिला खाली प्रशासन से मानकर प्रशासन जो माने रिच पर्सन ब्यूरोक्रेट से मानकर सब मिली लैंड्स थिला जो हाई कास्ट पीपल मानकर तो दे नॉट इंप्लीमेंट करलेनी द लॉ इन द ग्रासरूट लेवल लेसन करलेनी तो से जमी लैंड्स रिमेन रह गला इन द विथ द हाई कास्ट पीपल को पाखर रह गला एंड लैंड reforms face challenge due to the tribal land rights. Other people cannot entry in tribal land रे. They have rights, and that is why inequality is already continuing chalchi. Outcomes of in Odisha shows slower reduction in land inequality. So outcomes of in Odisha slower reduction कमिला धीरे in land inequality जो असमानता आस्ते आस्ते कमिला compared to some other state किंतु अधिक Bihar से other state रे more accessible माने तंगर equality already get higher but Odisha रे lower. Rich persons rich is poor person farmers villagers get a minimum amount of land. Nationally land reforms have reduced intermediary exploitation. Nationally our land reforms have reduced intermediary exploitation जो जमींदारी but failed to eliminate concentration of land holdings. But fail है to eliminate माने उच्छेद कर दवा. Abolish concentration of the land holdings. जो बड़ो लोग लैंड होल्डिंग्स रखते 1000 एकड़ दैट एलिमिनेट है नहीं बिकॉज नाउ द यू नो जो बड़ा बड़ा अंबानी अडानी दे हायर करते हायर 1000 एकर्स ऑफ लैंड विथ 2 रुपीज 3 रुपीज दे गेट ए लैंड दिस इज ऑफ द पॉलिटिक्स
politician କଥା ହଉନି। So education will change everything. Last question, supply chain management plays a crucial role in the efficiency of the food processing industry. Food processing जो होची in India by increasing procurement productions. Supply chain management plays a crucial role in the efficiency of food processing industry in India by influencing procurement ना अमल होची जो production होची inventory distribution बंटा होची effective SCM supply chain management ensures timely sourcing of raw materials. रॉ मटेरियल माने कंचा माल जो हमर होची एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर में जो कंचा माल बाहर धान चावल रॉ मटेरियल ये फूड प्रोसेसिंग में सप्लाई एंड इफेक्टिव एससीएम एज टाइमली सोर्सिंग रॉ मटेरियल रिड्यूस प्रोसेसिंग डिलेज हमर जो प्रोसेस रे डिले होची ना चावल रु धानटा माने इंडियन फार्मर्स आर पुअर आवर इन वेयर हाउस सिस्टम वेयर हाउस मीन्स जोटी हमर सब धान व्हीट इज स्टोर एक रहइबो गवर्नमेंट store house that is not available. So our धान wheat at the time of harvestation time see it already destroyed by the rain rats naturally calamity ji people faces problems ତେଣୁ reduce processing delay जो हमर होची धान रु चावल हेकरी ट्रांसफर हवा को जो वेयर हाउस को सब को कंपनी को that is late होची ऑप्टिमाइजेशन लॉजिस्टिक हमर सब लॉजिस्टिक माने हमर जो reduce लॉजिस्टिक पड़थिले हम गाड़ी रे ट्रैवल करिवो ट्रांसपोर्ट हबो दैट आर द कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड मिनिमाइजेस वेस्टेजेस हम वेस्टेज को मिनिमाइज करिया पड़े बहुत नष्ट हो जाउची धान चाष क्षेत्र रे एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरिंग अमल करे समय रे भी जो काला बैसाखी एंड सुपर साइक्लोन एवरी एट दैट नेचुरल डिजास्टर्स कमिंग टू द इंडिया एंड द ओडिशा माने मोस्टली ओडिशा तो हमर वेस्टेज एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टेशन मोस्ट परसेंटेज ऑफ द फूड वेस्टेज होची cereal crops wastage thereby enhancing overall productivity बढ़िया पड़ियो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी बढ़िया पड़ियो प्रॉफिट बढ़िया पड़ियो रिड्यूस कमया पड़ियो प्रोसेसिंग दिले ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक को टू एड्रेस ए बॉटलनेक्स इन ओडिशा सप्लाई चेन को एड्रेस करे पड़े बॉटलनेक जो ऑब्स्टेकल सब अछि हमर ओडिशा सप्लाई चेन रे फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन एक सब स्टेप को नवा पड़ियो केमति हम बंद करिया केमति बंद करिया हमर फर्स्ट स्टेप से फॉलो इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी अपग्रेड द ट्रांसपोर्टेशन पड़ले में ट्रांसपोर्ट system has a 90% of wastage of the materials so people will get the minimum supported price paइबे मंडी will come to village को आसीबो every government will come to village को आसीबो upgrade transport networks roads cold storage facility जेन पड़ले जो वायर हाउस कोल्ड स्टोर को धान रखा हो कोल्ड स्टोर रे फल पनीपरिया वेजिटेबल्स दैट ये पियाज आलू पोटैटो बड़ धान एरा सब वायर हाउस रे रहइबो गवर्नमेंट स्टोर रे रहइबो दैट विल माने एवरी पंचायत रे वन वायर हाउस government store will be mane 2 acre 3 acres land 4 acres land storage should be necessary to reduce the transit times storage facility दरकार to reduce the transit times and spoilage नष्ट जो होची transit times जो जीवा आसे खर्च होची enhance procurement practices अमल practices को बढ़ाय पड़ियो implement a contract farming or vendor manage inventory to ensure steady raw material supply इम्प्लीमेंट करिया पड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और वेंडर मैनेज इम्प्लीमेंट करिया पड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को वेंडर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग माने कोन ए भी एंड वेंडर मैनेज इन्वेंटरी टू एंश्योर स्टेडी रॉ मटेरियल सप्लाई करिया पड़िबो सार एवरीथिंग सी एनहांस प्रोक्योरमेंट अमल पाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सी माने बिजनेसमैन हु वांट टू इन्वेस्ट करिया चाहूचे से को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देबा पड़े इम्प्लीमेंट करिया पड़े वेंडर मैनेज करिए to ensure the raw material supply जो सप्लाई होची so enhance करे procurement adopt technology माने farmer and businessmen व्यापारी बा गवर्नमेंट that should be enhanced procurement केमते अमल हबो कारण इंडिया 50% क्रॉप लॉस हो जाउची at the time of procurement by in the field रे जाउची in the field paddy field रे in the agriculture field रे enhance procurement adopt technology use ERP or IoT based system for real time tracking and demand forecasting मान जो पाग हम पूर्वानुमान होची रियल टाइम ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी मींस जो हमर अमल मशीन जो हार्वेस्टर मशीन तो कोन डंपर धान कटा मशीन जो पैडी कटिंग मशीन एंड न्यू टेक्नोलॉजी फॉरेन कंट्रीज दे हार्वेस्टेशन बाय द प्लेन रे मध्ये करसंती दे फॉर द लैंड दे प्लाउ लैंड हळ करसंती तो न्यू टेक्नोलॉजी ट्रैक्टर और
at the time of जो काला बैसाखी फ्लड टाइम रे हाउ माने क्विकली स्पीडीली हार्वेस्टन will complete हो procurement complete हो that should be used by the technology. New technology should be engaged and strengthen cold chain, invest in refrigeration and logistics to preserve perishable goods. Alu, piyaj, vegetables, kobi, cabbage, onion, that should be refrigerated in the cold storage. And perishable goods will be demolished perish within short time रे that should be stored in the cold storage. That in the off season tomato rate 100 rupees 200 rupees, so tomato should be preserved, should be cold storage रे. Means every panchayat any block area cold storage should be necessary opened by the government. People will easily access to the cold storage. Strengthen the cold chain, streamline regulation, simply customs and companies procedures to avoid delays. Streamline regulation occur. Customer money and compliance procedures to avoid delay. Delay जमती न हो, easily access कर पारे, easily reach कर पारे. Capacity building, train stakeholders in best SCM practice, the management process and risk management. Capacity building means actually awareness. Farmers should be aware of the correct. There should be conscious. Government should be launch awareness programs of the farmers, so they should be know about the forecasting, panipago, radio, technology, mobile. See what happens before 5 days any kalabaisaki, many types of natural disaster will come before 5 days, before 2 days, what types of precaution they will be taken. That should be aware. That should be awareness by the spread the awareness among the farmers. And the risk management, they should take the risk management. Collaborate with the local farmers, promote aggregation centers to improve the raw material aggregation and quality. Collaborate with the local farmers, so collaborate collaborate, promote aggregation centers, promote improve raw material, improve aggregation and quality.